Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. अच्छा ये आप लोगों की एक problem थी and everyone was like asking me we are unable to solve this problem. I don't understand why this problem is so much confusing for you all. This is simply a code. First of all, this is just a function, right? It has a simple return type. That is why it has a return A. So you have a return type function. This is the name of the function, and then you are taking two parameters inside this function. Inside this function, you are having a while loop, which is just checking if something A which you entered is not equal to B which you already entered. All right, because if it's taking the parameters, so someone is gonna give the values. Then you are doing if A is greater than B, then A is equal to B. ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए या इफ देन को लिखने के लिए. एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड दीज थिंग्स इन योर courses, that's not my problem. I'm teaching you compiler, not the understanding of code. But yet just try to understand कि ये यहाँ पे इसके बाद then वाली जो statement आती है, like what we are gonna do, it's just printed right off there. और else के बाद क्या आता है, it's also printed there. Now just don't try to make the sense out of this thing right now. आप ये समझें कि code है क्या. Alright, understandable code है. This is a function. Inside the function you are having a loop and an if statement. उसके बाद जो पहली चीज हमने करनी थी उसमें ये था that we were supposed to make the tokens. This is the first phase of compiler. Just to remember, if you get any code and you are supposed to do all the phases of compiler, तो आपने all phases of compiler करने हैं. उसमें first phase है tokenization का, and these are not correct tokens. ये सिर्फ उन्होंने tokens like आपको blocks करके बताया हुआ है कि this is how the tokens are made. But actually you have to do the way जिस तरह मैंने आपको बताया है कि tokenization होती है. You have to tell what is a keyword, like this is a keyword, this integer is a keyword, this is an identifier, this is a left parenthesis, this is again a keyword, this is an identifier one. दिस इज पंचुएशन मार्क्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं होती. तो आपने हर एक कीवर्ड को पूरा करना है और इसको इस तरह नहीं करना है. नाउ इफ यू आर हेयरिंग द लेक्चर तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पेपर में कोई भी कोड आएगा उसकी आपने टोकनाइजेशन प्रॉपर तरीके से करनी है जैसे टोकनाइजेशन की जाती है. आफ्टर टोकनाइजेशन द नेक्स्ट फेज इज पार्स ट्री. तो इसका पार्स ट्री इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया हुआ. दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉपर पार्स ट्री. इसमें कोई गलती नहीं है एंड यू कैन जस्ट कीप द सेम पार्स ट्री. इसी तरह आपका पार्स ट्री बनेगा. कोई भी आपके पास अगर लूप आता है या सिंपल स्टेटमेंट्स आती हैं या इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो मेनली इफ यू फोकस ऑन द वाइल लूप, तो अगर आपको वाइल लूप इधर से समझ आ जाता है दैट्स वेल एंड गुड. पार्स ट्री के बाद हमारे पास है सिमेंटिक एनालिसिस और उसमें साथ एक सिंबल टेबल का उन्होंने शो किया हुआ है. तो दैट्स द सेम पार्स ट्री और बस सिर्फ बताया हुआ है कि सिंबल टेबल में हमने सिर्फ ए और बी की एंट्री करवाई है बिकॉज वी ओनली नीड टू डेटाज to be there. So this exact thing, this parse tree and then this semantic, because कोई semantic changes हो नहीं रहे, सब कुछ integer में ही है, integer में ही comparisons हो रहे हैं. So that's why semantic में कुछ हमें ऐसा कुछ problem required भी नहीं था और कुछ हमें करना भी नहीं था. So that's just a simple thing. Symbol table में just two हम लोग identifiers store करवा रहे हैं and that's it. Whenever you are going to make the parse trees, आप उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन और उस तरीके से. ये एग्जैक्ट कोड लिखा हुआ है. द गुड थिंग इज दैट यू राइट डाउन द कीवर्ड आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2 एंड स्टफ लाइक दैट. After that you have this 3 address code. This is the main problem for a lots of kids कि ये 3 address code किस तरह बना हुआ है. आप सिर्फ mainly देखें what are they. First of all, what are they doing? They are just picking up this if statement because while if की base पे ही चल रहा है. If statement में हमारे पास क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं if a is not equal to b, go to L1. L1 is a specific. अच्छा, अब आप ये समझ लें कि L1 is a specific function or a specific thing to do which is usually done in assembly or in such kind of address codes. अब आप just look at that. If it's not equal, then you're going to L1, which is just going to check another condition. But on the other hand, if something else goes on, तो हम कहाँ जाएंगे? Go to the last. But we are going to L1, so we are just saying maybe if A is greater than B, so we are just gonna go to L2. That's what we are gonna do, right? Now we are going to go to L2. Now you can just see that L2 is again some sort of function here which is just saying
दैट आप यहाँ पे देखें इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगा या फिर मे बी इक्वल हो एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं. Otherwise, if that doesn't happen, so we are going to L3, which is just telling us the another condition, which is B is equals to A. मतलब आपने सारी कंडीशंस मैनेज की हैं, बस इसको लिखा हुआ थोड़े हुए तरीके से है. एंड अदरवाइज वी गो टू द लास्ट, एंड व्हाट दिस लास्ट थिंग इज डूइंग, इट्स जस्ट कॉलिंग द प्रोग्राम. ये आपके पास वैसे ही है जैसे आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं या कोई सूडो कोड लिखते हैं और समथिंग लाइक दिस, आप उसको उसी तरीके से करते हैं. यहाँ पे आपकी ये 3 एड्रेस कोड में उसकी ट्रांसलेशन होगी. अब आपके पास किसी भी तरह का कोड है, आप उसका सूडो कोड लिख सकते हैं. आपको अगर सी में कोड, आपको सूडो कोड दिया जाए तो आप उसका कोड लिख सकते हैं. तो आपको अगर कोड ही एक्चुअली दे दिया जाए तो क्या आप उसकी लॉजिक बना के उसका 3 एड्रेस कोड या कोई भी सूडो कोड नहीं लिख सकते? अपनी मर्जी से उन लाइंस को डिफाइन करें. लाइक मेन थिंग इज दैट यूज योर ब्रेन फॉर दीज थिंग्स. After that, we have this thing, which is a really big problem for you all. Just to remember, this is just an assembly language, which is simply saying like move A1 into R0 register. It's just like, right? अब हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी स्टैक से A और B को लोड कर रहे हैं. आपके पास असेंबली में ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं. ठीक है, हमने बी को भी लोड कर लिया, मूव करवा लिया. उसके बाद हमने कंपैरिजन किया. CMP इज अ कंपैरिजन एंड वी आर जस्ट डूइंग कंपैरिजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव इन R0 एंड R1. देन GMP मींस जंप टू L1. हम L1 पे जंप करें, which is just having another condition. You know, this condition was actually stored in L1. And this J and E is another statement. It's also used in the assembly. Jump not equal to. So we are just, you know, doing a comparison. उसके बाद ये EDX और EAX, they are just the registers. ये registers हैं जो आपके पास assembly में use होते हैं. तो हम लोग इसमें ये सारा फिर से जंप करना और फिर से ये सारी चीज़ें, और ये एंड पे आपके पास रिटर्न फंक्शन है और आप एंड पे लाजमी तौर पे उसको लीव करवाते हैं. जस्ट आप ये याद रखें कि असेंबली कोड में हम हमेशा, आपके पास जो भी चीज़ आएगी उसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि असेंबली कोड में आप हमेशा चीज़ों को लोड करते हैं. अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन करते हैं, कोई फंक्शंस है तो उन फंक्शंस की पोजीशन पे आप उनको जंप करवाते हैं, एंड दैट्स ऑल. आप उसको जितना भी अटेम्प्ट करेंगे, आई विल एक्सेप्ट इट. जितना भी आप इस असेंबली कोड को अटेम्प्ट कर लेंगे, आई विल जस्ट सिंपली एक्सेप्ट इट कि चलिए ठीक है, जिस हद तक भी आपको लगा कि आप उसको उस कोड को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस हद तक उसको अटेम्प्ट कर लें. एंड इफ़ यू रियली वांट तो मैं आपको एक क्विक आई वुड से क्विक नोट्स ऑफ असेंबली कोड जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, और आप उसको जस्ट एक दफ़ा देख सकते हैं. क्योंकि बहरहाल आई एम जस्ट गोना मेक इट क्लियर, यू आर गोना गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट फॉर the phases of compilers are pretty important for your paper. तो आपने उसको ज़रा अच्छे तरीके से करना है. Alright, if you have any other question, just try to solve it on your own because tomorrow is your paper, right? Thank you.